I hope I'm audible and visible, and my screen is also visible. So we'll be starting with the day 70 of the daily drill that we have. And today we are going to look at a couple of LR sets, right? So I think both of these are from CAT 2021. And both of them are not very easy sets. In fact, the first one that you can see on your screen is a particularly nasty set. And the second one is something that looks like a normal, usual arrangement based set wherein you will have to categorize things into different bits. So you will have to maybe put things as in the form of months, and then you will have to put it in the form of in terms of which person is from which country, and then in terms of the departments as well. So it's not a difficult set, or it's not something that you would not have seen earlier. Just that you will have to ensure that. Okay, just give me a second. I'm setting this up. Yeah, we should be fine. All right, yeah. So that was another thing, and that is basically where there is a lot of complexity in the second set that we'll be doing. The first set is not very difficult, but there are so many moving parts that are there. Plus, there will be a situation wherein you will not know if whatever you have done is exactly right or not. There is one very small bit of uh, information that we have, which is not exactly mainstream, right? So that is basically a problem that we have in this particular set. So let's get going with this particular set. Let's start with the first bit. So I just look at the chat once, and yeah, sorry that we're starting a bit late. I got stuck doing something, and that's why we got a bit delay. Yeah, sorry. Harsh, I got a chance to read your comment on one of your videos. Harsh, I think the one that you spoke about, you are getting tired and maybe bored when you're taking a mock. So I think that's basically where you have to uh, maybe not take too many mocks and maybe take it a bit slow. So what you have mentioned makes sense. That you are not expected to take a mock every couple of days, every 3 days or something, and maybe lie a bit low for 15, not 15 days, but 7 days, 8 days or so, 1 week maybe. Don't do anything. Don't take mocks, and then maybe you will be able to take it in a better manner. Try to take the mocks maybe for an extended duration. What I mean by that is, you start with the mock and maybe uh, don't do anything for the first 15-20 minutes, and then you start with the attempt, right? So you sit in front of your screen, do not have access to any phones, anything on your laptop or anything, and maybe after you're done with 20 minutes, then you start with the test, because that is basically what is going to happen at the cat. If you are getting slightly bored or exhausted by the time you reach the end of the test, cat can anyway you're going to have to spend another 20-30 minutes idly in front of the system, right? So be mentally prepared for that. Okay. So on that note, let's start with the first set today. So we have Ganga, Kaveri, and Narmada are three women who buy four raw materials, and the raw materials are mango, apple, banana, and milk, and sell five finished products. So raw materials देते हैं, finished products बेचते हैं. And the finished products are mango smoothie, apple smoothie, banana smoothie, fruit smoothie, and fruit salad. So पांच चीजें these people make and sell. Now, table 1, which is the first table that we have here, gives the information about the raw materials required to produce the five finished products. Meaning, mango smoothie अगर बनाना है तो उसके लिए mango and milk लगेगा. Apple smoothie के लिए you will need apple and milk. Banana smoothie के लिए banana and milk as it goes. Mixed fruit smoothie के लिए mango, apple, banana, milk. And fruit salad के लिए mango, apple, banana. That is basically the requirements that we have in terms of creating these finished products. Now, 1 unit of a finished product requires 1 unit of each of the raw materials mentioned in the second column of the table. तो 1 unit of mango, 1 unit of milk अगर करेंगे तो मैंगो स्मूथी बनेगा. Now यहाँ पे grammage and ml and all ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है. Basically we are using 1 unit and equivalence यहाँ पे establish किया हुआ. The second bit that we have here is 1 unit of milk, mango, apple, and banana cost 5 rupees, 3 rupees, 2 rupees, and 1 rupee respectively. So milk is available at 5 rupees per unit.
Mango is available at 3 rupees per unit, apple is slightly cheaper, 2 rupees per unit, and banana is 1 rupee per unit. Now यहाँ पे this is basically where the first bottleneck lies. तो अगर ये वाला क्रैक कर लिया तो maybe you will be able to solve it. I would not recommend you to solve this during the actual test, but huh, if you are trying it out and if you are trying to see if you are able to answer maybe one or two questions on the basis of the data, this is one thing that will definitely be useful to you, or you might not understand this at all, right? Because each unit of a finished product is sold for a profit. तो profit पे बेच रहे हैं, agree. Equal to 2 times the number of raw materials used to make that product. अभी प्रॉफिट कैन नॉट बी इक्वल टू नंबर्स ना, मतलब प्रॉफिट नंबर है, न्यूमेरिकल है, अग्री. बट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज और प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस आर मच इजियर कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प. अब यहाँ पे 2 times द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स है. थैंकफुली यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. एप्पल स्मूदी इज मेड विद 2 रॉ मटेरियल्स, एप्पल एंड मिल्क, एंड इट विल बी सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट. 4 रुपीज क्यों? बिकॉज देयर आर 2 इंग्रेडिएंट्स. तो जितने रॉ मटेरियल्स हैं उसका डबल प्रॉफिट. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट बिट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Leftover raw materials are sold during the last business hour of the day for a loss of rupees 1 per unit. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट 3 hours का तो यहाँ पे सॉर्टेड है. लास्ट आवर के अंदर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स जो भी लेफ्ट ओवर होंगे वो लास्ट आवर में बेचे जाएंगे. नाउ वी हैव नॉट बीन टोल्ड दैट ओनली लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स विल बी सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर. There will be some that will be finished products, whereas there will be some raw materials that would be sold as it is. Again, raw materials will be sold at a loss of 1 rupee per unit. अब 1 rupee per unit के लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब लेट से ओनली 1 unit ऑफ मिल्क इज लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट ओवर, तो उसको 4 रुपए में बेचा जाएगा. 3 रुपीज का मैंगो कॉस्ट प्राइस था, लेट से. ठीक है, तो मैंगो विल बी सोल्ड फॉर 2 रुपीज, एप्पल विल बी सोल्ड फॉर 1 rupee, एंड बनाना विल बी सोल्ड फॉर 0 rupees. बेसिकली दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस. The amount in rupees received from sales for each woman in each of the 4 business hours of the day is given in this table. So 23, 19, 31. ये सब combinations होंगे, right? So apple smoothie, banana smoothie, mango smoothie, fruit salad, mixed fruit smoothie, ये पांचों के पांचों चीज मिला के जो भी बनेगा that is basically going to contribute to the revenue. So 23 जो बना है ना, it could be made by a lot of different things. Maybe 1 item, 2 items, 3 items, वैसे करके ये बना. We also know some additional facts. No one except possibly गंगा, right? Possibly गंगा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि गंगा ने भी नहीं बेचा, ऐसा भी हो सकता है. बट नो वन एक्सेप्ट पॉसिबली गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी. सो गंगा छोड़ के बाकी किसी ने भी मैंगो स्मूदी बनाया ही नहीं. ठीक है. ईच वुमन सोल्ड ईदर 0 or 1 unit ऑफ एनी सिंगल फिनिश प्रोडक्ट इन 1 hour. सो 0 or 1 unit. सो मैक्सिमम ऑफ 1 unit कुड हैव बीन सोल्ड इन एनी आवर. तो ऐसा नहीं होगा कि 2 मैंगो स्मूदी बेचे, 3 बनाना स्मूदी बेचे, 1 woman वुड नॉट हैव डन. Each woman had exactly 1 unit each of 2 different raw materials as leftovers. अब ये leftover last hour का जो part है वो यहाँ पे है. 1 unit each of 2 different raw materials. So it could be milk and banana, it could be milk and apple, it could be milk and mango, apple, banana, mango, banana. तो ये 6 combinations possible हैं. And lastly, we have been told that no one had any banana left over. So when we were discussing this, you might have maybe heard some hesitation in my voice. दैट बनाना का कॉस्ट ही 1 रुपी है, एंड फाइनली अगर 1 रुपए के लॉस पे बेचना है तो बेसिकली बनाना तो फ्री में बेचेंगे, राइट? वी आर नॉट इवन सेलिंग बनाना, वी आर जस्ट गिविंग देम अवे. बट यहाँ पे वी हैव बीन टोल्ड दैट नो वन हैड एनी बनाना लेफ्ट, और व्हिच ठीक है, मतलब थियोरेटिकली इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज बनाना लेफ्ट ओवर होता भी तो भी हम उसको 0 रुपीज में दे रहे होते, हाउ डज इट मैटर, राइट? बट यहाँ पे बनाना लेफ्ट ओवर है ही, तो दैट इज द गुड पार्ट. Now, we have to understand a few things before we start solving this. तो यहाँ पे करना क्या है? We have to understand how exactly was the sales happening. The core of this set is going to be this table. ये टेबल जितना जल्दी हम लोग अनस्क्रैम्बल करके इसको हम लोग कंपोनेंट्स में बता सकते हैं, उतना इट विल बी इजियर फॉर अस टू फिगर आउट. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज इट दैट वी आर सेलिंग, क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अब यहाँ पे जस्ट पुट इट एज डिटेल्स. डिटेल्स मतलब क्या कॉम्बिनेशन इसका होगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस हियर. So we have 5 items here that we're making. One is mango smoothie, one is banana smoothie, one is apple smoothie, one is mixed fruit smoothie, and one is fruit salad. ठीक है, तो ये 5 चीजें हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं. Now if you look at it, what exactly was the relationship between the cost price, the selling price, the profit, basically क्या चल रहा था? तो कॉस्ट प्राइस देखते हैं पहले. सो बाय नाउ यू शुड हैव मोर और लेस मेमोराइज्ड कि कैसे बनता है ये सब चीज. सो मैंगो स्मूदी इज मेड बाय यूजिंग मैंगो एंड मिल्क. सो मैंगो एंड मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2 आइटम्स हैं, सो आई जस्ट राइट 2 इंग्रेडिएंट्स आर देयर. बनाना स्मूदी में भी 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे भी 2 इंग्रेडिएंट्स हैं. मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी के अंदर यू हैव 4 इंग्रेडिएंट्स, ऑल द आइटम्स आर यूज्ड. एंड फ्रूट सैलेड के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स, ऑल 3 फ्रूट्स आर यूज्ड, मैंगो, एप्पल, बनाना.
मिक्स फ्रूट स्मूदी के अंदर मिल्क, मैंगो, एप्पल बनाना, चारों चीजें हैं। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड। ठीक है, ये वाला पार्ट है। Now we also know that cost price कितना होगा, तो लेट्स लुक एट द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस दैट वी हैव। अब मैंगो स्मूदी बनाने के लिए दो आइटम लग रहे हैं, मैंगो एंड मिल्क, सो 5 + 3 8 रुपीस हो जाएगा यहाँ पे। बनाना स्मूदी बनाने के लिए बनाना एंड मिल्क लगेगा, सो बनाना इज 1 रुपी, मिल्क इज 5 रुपीस, तो 6 रुपीस लग जाएंगे यहाँ पे। एप्पल स्मूदी बनाने के लिए 2 रुपीस प्लस 5 रुपीस, तो 7 रुपीस हो जाएंगे। मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी बनाने के लिए ऑल दी फोर इंग्रेडिएंट्स विल बी नीडेड, सो 5 + 3 8 9 10 एंड 11 रुपीस का कॉस्ट प्राइस होगा। एंड फ्रूट सैलड के लिए ओनली दी 3 फ्रूट्स विल बी यूज, 3 + 2 + 1 6 रुपीस का फ्रूट सैलड बन जाएगा। ठीक है, सो टिल नाउ आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, और चलो, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। नाउ द सेकंड थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट कितना है। नाउ प्रॉफिट वी नो इज नथिंग बट ट्वाइस द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट हैव बीन यूज्ड। तो जितने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उसका ट्वाइस होना चाहिए प्रॉफिट। सो एप्पल स्मूदी इज मेड विथ 2 रॉ मटेरियल्स एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिट विल बी 4 रुपीस। 2 रॉ मटेरियल है तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे भी कर देख सकते हैं, अभी 2 रॉ मटेरियल है तो 4 रुपीस का प्रॉफिट, अगेन 2 रॉ मटेरियल्स 4 रुपीस का प्रॉफिट, 2 रॉ मटेरियल्स मींस 4 रुपीस का प्रॉफिट, 4 raw materials means 8 rupees profit and 3 raw materials means 6 rupees profit. So what will be the selling price or the revenue that is being generated by selling one unit of these combinations? 8 का cost price, 4 का profit, 8 plus 4 will be 12, 6 plus 4 will be 10, that will be the selling price, 7 plus 4 11, 11 plus 8 19 and 6 plus 6 12. So these are the 5 ways in which we can, or these are the 5 revenues that these three women can generate. ठीक है, नाउ व्हेन समवन इज टेलिंग यू दैट गंगा जनरेटेड 23 रुपीज इन रेवेन्यू, इसका मतलब क्या बना, इसका कुछ कॉम्बिनेशन करके 23 बना होगा ना। एंड एवरी वुमन इज सेलिंग ईदर 0 और 1 यूनिट ऑफ एनी सिंगल फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी 23 बनाना है तो एक चीज तो मैं 23 नहीं बना सकता, दो चीजों को ज्वाइन करके क्या मैं 23 बना सकता हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन। 12 प्लस 11 gives me 23। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूं तो 12 11 एक ही कॉम्बिनेशन होगा जिससे मेरा 23 बनेगा। सो आई कैन से दैट दिस 23 कैन बी मेड बाय यूजिंग 11 प्लस 12। ठीक है, अब ये 12 जो है ना वो या तो मैंगो स्मूदी से बनेगा या तो फ्रूट सैलड से बनेगा, दोनों में से एक जगह से 12 बनेगा। एज ऑफ नाउ वी डोंट नो वेदर गंगा सोल्ड 1 यूनिट ऑफ मैंगो स्मूदी इन द फर्स्ट आवर और 1 यूनिट ऑफ फ्रूट सैलड इन द फर्स्ट आवर, वी डोंट नो दैट, राइट? सो दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम हियर। ठीक है, चलो, कावेरी के केस में 19 है। अब कोई भी दो चीजों को ऐड करके तो 19 बनेगा नहीं, सो सिर्फ एक ही 19 का पॉसिबिलिटी यहाँ पे, वेर इन शी वुड हैव सोल्ड अ मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी। ठीक है, तो यहाँ पे 19 वुड हैव बीन रिटन एज जस्ट 19। अभी 31 को मैं एक केस में तो नहीं दे सकता, दो में दे सकता हूँ, तीन में अगेन आई कांट गिव, बिकॉज तीन में अगर देना होगा सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि 10 का एक दे दिया, 10 का एक और दे दिया और एक 11 का दे दिया, बट वी हैव बीन टोल्ड दैट ईच वुमन सोल्ड ईदर 0 और 1 यूनिट ऑफ एनी सिंगल फिनिश प्रोडक्ट, तो वो दो बनाना स्मूदी तो बेच ही नहीं सकती। So there is only a possibility जहां पे two items could have been combined to create a 31. The only way in which we can do this is 19 and 12. तो यहाँ पे we will just write 12 plus 19. अभी यहाँ पे देखेंगे तो 12 अगेन मुझे पता नहीं है मैंगो स्मूदी है कि फ्रूट सैलड है, बट वी नो वन स्मॉल थिंग हियर, नो वन एक्सेप्ट पॉसिबली गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी। तो नर्मदा तो मैंगो स्मूदी बेच ही नहीं सकती, राइट? पॉसिबली गंगा ने मैंगो स्मूदी बेची, बट नर्मदा कैन नॉट सेल अ मैंगो स्मूदी एट ऑल। सो दिस 12 हैज टू बी फ्रूट सैलड, सो आई जस्ट राइट फ्रूट सैलड हियर। एंड ये 19 जो है इसका तो एक ही कॉम्बिनेशन है, मिक्स फ्रूट स्मूदी होगा। यहाँ पे भी ये 19 है तो आई जस्ट राइट मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी हियर। अभी यहाँ पे 11 प्लस 12 है, 11 का एक ही कॉम्बिनेशन है एप्पल स्मूदी, सो आई राइट ए एस हियर। एंड 12 कैन ईदर बी अ मैंगो स्मूदी और कुड बी फ्रूट सैलड। अभी के लिए अपने को नहीं पता बिकॉज गंगा कुड हैव सोल्ड अ मैंगो स्मूदी। अभी नेक्स्ट बार देखते हैं सिमिलरली 21। नाउ 21 यू कैन राइट इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइटम्स ओनली इन दिस वे, बनाना स्मूदी प्लस एप्पल स्मूदी। तो इसको हम लिखेंगे 10 प्लस 11 और इसमें होगा बनाना स्मूदी प्लस एप्पल स्मूदी। 22 बनाना है, हाउ विल यू मेक 22? 11 into 2 is not possible because each woman sold either 0 और 1 यूनिट। तो 22 को अपन 11 प्लस 11 तो लिख नहीं सकते, तो इसको अपने को लिखना पड़ेगा 10 प्लस 12 के फॉर्म। अगेन इफ यू थिंक अबाउट इट, 10 जो है वो बनाना स्मूदी है तो यहाँ पे 10 के सामने बी एस लिख देंगे, और 12 जो है ना वो मैंगो स्मूदी भी हो सकता है तो फ्रूट सैलड भी हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज
Kaveri could not have sold any mango smoothies because only Ganga can sell mango smoothies. ठीक है, सो कावेरी ने बेचा होगा मैंगो स्मूदी नहीं बट फ्रूट सैलड, तो 12 रुपीज का फ्रूट सैलड बेचा होगा। 21 जो यहाँ पे है, द 21 कैन ओनली बी क्रिएटेड इन 10+11 वाला वे जो हमने पहले यहाँ पे देखा था 21, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 10+11 बनेगा। 10 would be the cost or the revenue generated by selling 1 unit of banana smoothie, and 11 would be the revenue earned by selling 1 unit of apple smoothie। अभी 29 पे आ गए। अब 29 कैसे बनेगा? अगेन वी कैन टेक टू थिंग्स एंड मेक 29, राइट? तो 29 के केस में 10+19 इज द ओनली कॉम्बिनेशन दैट एग्जिस्ट्स, क्योंकि कोई भी तीन चीजों को ऐड करेंगे ना, 30 के ऊपर चला जाएगा मेरा नंबर, 31 के ऊपर चला जाएगा, इनफैक्ट 33 के ऊपर चला जाएगा इनफैक्ट, राइट? सो तीन चीजों को ऐड करेंगे तो 33 के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे कोई भी नंबर ना 33 के आसपास भी नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल नो दैट वी आर टेकिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ ओनली टू आइटम्स। अभी 29 कैसे बनाएंगे? अपन 29 बनाएंगे 10+19 करके। अभी 10 वी नो इज बनाना स्मूदी एंड 19 वी नो इज मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी। फाइन। 30 कैसे बनाएंगे? 30 अगर बनाना है तो वी विल हैव टू यूज अगेन टू इंग्रेडिएंट्स और टू आइटम्स वी विल हैव टू सेल। द ओनली कॉम्बिनेशन दैट वी कैन सी हियर इज इफ इट इज 11+19। सो 11+19 एक ही कॉम्बिनेशन होगा जो अपने को 30 देगा, एंड दैट्स व्हाई 19 के सामने अगेन वी विल राइट मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी एंड 11 विल बी नथिंग बट एप्पल स्मूदी। ये मिल जाएगा। 23 बनाना है, अगेन वी कैन थिंक अबाउट 23 as 12+11, and we know that Narmada could not have sold any mango smoothie because गंगा के अलावा और कोई मैंगो स्मूदी नहीं बेच सकता। So 23 can be done as 11+12 and that 12 has to be fruit salad. So I write 11+12, 12 is fruit salad and 11 is apple smoothie. तो ये हो। अभी लास्ट आवर के अंदर ना देयर इज सम bit that we need to explore as well. First 3 hours is fairly straightforward except ये वाला एक पार्ट जहां पे अपने को नहीं पता ये 12 किस चीज के लिए स्टैंड करता है, अदरवाइज वी हैव सॉर्टेड एवरीथिंग। अभी लास्ट आवर में इफ यू लुक एट इट वी हैव 30, 27 एंड 22। नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस, 30 अगर बनाना है वी कुड हैव मेड इट यूजिंग 11+19। 27 अगर बनाना है, 27 तो इसमें बनता ही नहीं अपना, व्हाटएवर यू 27 तो बनेगा नहीं। 22 अगर बनाना है तो 10+12 से बनेगा, दैट मच वी नो। बट द प्रॉब्लम इज फोर्थ आवर के अंदर विच इज ऑल्सो द लास्ट आवर, कुछ अनसोल्ड इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी अपन बेच रहे हैं, लेफ्ट ओवर जो भी बेच रहे हैं, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम। अभी लेफ्ट ओवर का सीन क्या है? लेट्स लुक एट लेफ्ट ओवर का सीन क्या है। अभी लेफ्ट ओवर जो है ना, सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर फॉर अ लॉस ऑफ 1 रुपी पर यूनिट। मतलब अभी मिल्क का कॉस्ट 5 है तो मिल्क का सेलिंग प्राइस बिकम्स 4, मैंगो का कॉस्ट प्राइस 3 है तो मैंगो का सेलिंग प्राइस बिकम्स 2, एप्पल का कॉस्ट प्राइस 2 है तो एप्पल का सेलिंग प्राइस बिकम्स 1, और बनाना तो अपन लास्ट में बेचने हैं, लेफ्ट ओवर है ही नहीं, दैट्स व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। व्हाट एल्स डू वी नो अबाउट दिस? We know that each woman had exactly 1 unit each of two different raw materials as leftovers। अपने पास यहाँ पे क्या क्या नंबर्स बचे हैं? लेफ्ट ओवर जो हम लोग बेच रहे हैं ना वो 4, 2 या 1 में बेच रहे हैं। अभी 4, 2 एंड 1 में अगर अपने को देखना है, 4 इज मिल्क, 2 इज मैंगो एंड 1 इज एप्पल। ठीक है, ये है। अभी दो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स लेफ्ट ओवर्स कर सकते हैं। सो व्हाट ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? मिल्क प्लस मैंगो इज अ कॉम्बिनेशन, दिस विल गिव अस 4+2 मतलब 6 रुपीज का रेवेन्यू यहां से आएगा। समवन कुड हैव गॉट 6 रुपीज का रेवेन्यू फ्रॉम हियर। द सेकंड कॉम्बिनेशन पॉसिबल इज मिल्क प्लस एप्पल, इसमें 4+1 मतलब 5 रुपीज का अपने को रेवेन्यू मिल जाता लेफ्ट ओवर बेच के। एंड द थर्ड थिंग इज मैंगो प्लस एप्पल, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। If this combination would have been there, the person who sold this, the woman who sold this would have got 3 rupees as revenue. लॉस पे बेच रहे तो क्या हो गया? 356 can be the revenue from leftovers। दिवाकर करेक्ट, एग्जैक्टली। सो 653 यहाँ पे लेफ्टओवर्स का रेवेन्यू बने। We know that the revenue was 30, 27 and 22। There is a possibility that someone could have sold some leftovers and then they would have got 356, ऐसे हो सकता था, राइट? सो लेफ्ट ओवर का यहाँ पे 356 का एक चीज हो सकता था। लेट्स से वी सोल्ड 3, 5 और 6 एंड देन वी सी व्हाट हैपेंस, राइट? सो दैट इज वन वे इन व्हिच वी कुड हैव डन दिस। सो हियर इफ यू लुक एट दिस 30, राइट? अगर 30 के अंदर लेट्स से लेफ्ट ओवर का कंपोनेंट होता, ठीक है, लेट्स से 30 का कंपोनेंट होता एंड वी नो दैट ईच वुमन हैड एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल एज लेफ्ट ओवर्स, मतलब उसमें कुछ तो ऐसा रॉ मटेरियल का लेफ्ट ओवर होना ही चाहिए। सो दिस 30 में से या तो 3 is the amount that is generated or revenue that is generated through leftovers, or 5 is the revenue that is generated through leftovers, or 6 is the revenue that is generated through leftovers। तो 3, 5 या 6 कुछ ना कुछ यहाँ पे लेफ्ट ओवर में से जनरेट हुआ होगा।
विच बेसिकली मीन्स दैट गंगा ने लास्ट आवर के अंदर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचा होगा उसका वैल्यू कितना हो सकता है। अगर 3 रुपीज का लेफ्ट ओवर बेचा है तो 27 रुपीज का फिनिश प्रोडक्ट बेचा था। अगर 5 रुपीज का लेफ्ट ओवर बेचा है तो 25 रुपीज का फिनिश प्रोडक्ट बेचा था, बिकॉज 30 इज वॉट शी हैज जनरेटेड इन द लास्ट आवर। अगर 6 रुपीज का लेफ्ट ओवर उसने बेचा तो 24 उसका एक्चुअल और फिनिश्ड कंप्लीटेड प्रोडक्ट सेल करके पैसा आया होगा, राइट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 27, 25, 24 में से विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू बी 27 यूजिंग टू थिंग्स और मेनी थिंग्स ऑफ दिस? डेफिनेटली नॉट। 27 कैसे बनाएंगे अपन यहाँ पे? 12 प्लस 15 चाहिए, बट 15 है नहीं। 10 प्लस 17 नॉट पॉसिबल। 11 प्लस 16 नॉट पॉसिबल। 19 प्लस 8 नॉट पॉसिबल। 12 प्लस 15 नॉट पॉसिबल। तो गंगा 27 कर ही नहीं सकती, मीनिंग गंगा कुड नॉट हैव सोल्ड 3 रुपीज वर्थ ऑफ लेफ्ट ओवर्स। 25 देख लेते हैं। Is 25 possible here? 12 plus 13 should have been 25, but 13 है ही नहीं। 10 plus 15 नहीं कर सकते। 11 plus 14 नहीं कर सकते। 19 plus 6 not possible। 12 plus 13 not possible। So 25 भी possible नहीं है। Which means that out of the 30 rupees that Ganga has earned in the last hour, Ganga should have earned 6 rupees through leftovers. Now what does this mean? अगर 6 rupees लेफ्ट ओवर से आ गए गंगा के पास, द रिमेनिंग 24 rupees शुड हैव बीन कम बाय सेलिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे 24 कैसे बना सकते हैं? 12 प्लस 12 इज 24। 10 प्लस 14 नहीं बनेगा। 11 प्लस 13 नहीं बनेगा। 19 प्लस 5 नहीं बनेगा। सो द ओनली वे पॉसिबल इज फॉर गंगा टू सेल 12 प्लस 12, मीनिंग दैट गंगा को एक मैंगो स्मूदी बेचना पड़ेगा और एक फ्रूट सैलड बेचना पड़ेगा, एंड इन एडिशन टू दैट उसको 6 रुपीज का लेफ्ट ओवर बेचना पड़ेगा। अब 6 रुपीज का लेफ्ट ओवर कैसे बनता है? वी हैड सीन 6 रुपीज का लेफ्ट ओवर इज मेड थ्रू मिल्क एंड मैंगो। तो अभी आई जस्ट राइट मिल्क एंड मैंगो हियर। आई राइट मिल्क प्लस मैंगो जस्ट टू गिव अस एन आइडिया दैट ये लेफ्ट ओवर्स थे। फाइन। नाउ लुक एट कावेरी। अब कावेरी ने 27 का बेचा है। अब कावेरी ने 27 का रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें से शी हैज टू सेल ईदर 3 रुपीज थ्रू लेफ्ट ओवर्स, 5 थ्रू लेफ्ट ओवर्स और 6 थ्रू लेफ्ट ओवर्स। तो अब क्या क्या केसेस पॉसिबल है फॉर कावेरी? 27 minus 3 will be 24, 27 minus 5 will be 22, and 27 minus 6 will be 25. ये तीन केसेस पॉसिबल है। नाउ कैन कावेरी सेल 24 रुपीज वर्थ ऑफ स्टफ? 24 रुपीज वर्थ ऑफ स्टफ बेचने के लिए कावेरी विल हैव टू सेल अ मैंगो स्मूथी एंड अ फ्रूट सैलड, बट एक्सेप्ट गंगा नोबडी कैन सेल अ मैंगो स्मूथी। तो कावेरी तो 24 रुपीज का कुछ कर नहीं सकती, सो 24 इज नॉट पॉसिबल। 22 कैसे बेच सकते हैं? If Kaveri has to sell 22 rupees worth of stuff, what will Kaveri have to do? Kaveri will have to sell 10 rupees का कुछ item and 12 rupees का कुछ item. Now we know that there is only one combination that exists because Kaveri mango smoothie तो बेच ही नहीं सकती. So Kaveri could have sold either banana smoothie, either it should be 10 plus 12, which is fruit salad. So I'll just write it here, two cases, banana smoothie plus fruit salad. This is one case. एंड दी अदर केस इज पॉसिबल 22 अगर बनाना है तो 10 प्लस 12 मैंगो स्मूदी तो हो ही नहीं सकता। सो 22 बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, 10 ऑफ बनाना स्मूदी प्लस 12 ऑफ फ्रूट सैलड। 21 पॉसिबल है क्या? 21 ऑल्सो पॉसिबल। 10 प्लस 11 करेंगे जैसे पहले किया था, राइट। सो 10 प्लस 11 करके उसका 21 भी बन सकता है। सो 10 प्लस 11 में 11 इज एप्पल स्मूदी एंड 10 इज बनाना स्मूदी। सो कुछ भी करेंगे ना तो कावेरी विल हैव टू सेल अ बनाना स्मूदी फॉर श्योर। एंड कावेरी ने क्या किया है यहाँ पे? कावेरी हैज ईदर सोल्ड 5 रुपीज वर्थ ऑफ लेफ्ट ओवर्स और 6 रुपीज वर्थ ऑफ लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो केसेस आएंगे। आई जस्ट ट्राई टू राइट दीज टू केसेस हियर। सो अपर केस इज व्हेन वी आर फोरगोइंग 5 रुपीज बिकॉज ऑफ लेफ्ट ओवर्स, सो मिल्क प्लस एप्पल होगा। सो आई जस्ट राइट MI प्लस A, एंड सेकेंड 6 रुपीज वाला जो अभी MI प्लस M है, MA है, चलो जो यहाँ पे क्या था हम लोग। ठीक है, माइट लुक थोड़ा शादी, बट दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन ऑन योर रफ शीट एज वेल। ठीक है, सो कावेरी केस 2022 बोथ आर पॉसिबल। नर्मदा के केस में जल्दी से देख लेते हैं। 22 आउट ऑफ विच ईदर 3 आर लेफ्ट ओवर्स और 5 आर लेफ्ट ओवर्स और 6 आर लेफ्ट ओवर्स। तो 19, 17, 16 बना। नाउ इफ यू लुक एट व्हाट हैज हैपेंड हियर, 17 अगर बनाना है, लेट्स से 12 प्लस 5, 11 प्लस 6, 10 प्लस 7 पॉसिबल ही नहीं होगा। 16 बनाना है तो भी पॉसिबल नहीं होगा। 19 बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू सेल अ मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी। So there's only one case possible. Mixed fruit smoothie should have been sold by Narmada in the 4th hour, which should have cost 19 rupees. Which means that उसका 3 रुपए का लेफ्ट ओवर बेचा जाता। अब 3 रुपीज का लेफ्ट ओवर कैसे बनेगा? We will have to use
मैंगो प्लस एप्पल, सो मैंगो प्लस एप्पल यूज करेंगे। आई जस्ट राइट ए प्लस एम ए हियर, जो अपना लास्ट वाला पार्ट सेटिस्फाई कर देगा। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। नाउ वी हैव मोस्ट ऑफ द डेटा। अपने पास सिर्फ दो ही चीजें दैट वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ। वन, व्हाट हैपेंड टू गंगा इन द फर्स्ट आवर, एंड टू, व्हाट हैपेंड टू कावेरी इन द लास्ट आवर। एक्सेप्ट दैट वी नो एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो एक बार ये वाला पूरा अपना क्लियर हो जाएगा, वी कैन इजीली फिगर आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। सो वी कैन लुक एट द क्वेश्चंस हियर एंड देन ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What best can be concluded about the number of units of fruit salad sold in the first hour? तो कितना फ्रूट सैलड बेचा था फर्स्ट आवर? Now we know that in this particular case, one fruit salad would definitely been sold by नर्मदा 12 रुपीज का। एंड ये जो 12 रुपीज का है ना, ये फ्रूट सैलड भी हो सकता है और ये मैंगो स्मूदी भी हो सकता है। सो ईदर गंगा सोल्ड वन और जीरो फ्रूट सैलड्स, एंड वी नो फॉर श्योर दैट नर्मदा हैज सोल्ड वन फ्रूट सैलड। So Ganga has sold either 0 or 1 and Narmada has sold 1 for sure. तो अपने को ये पता चल जाता है that either 1 or 2 fruit salads could have been sold in the first hour. So two possible cases, दोनों भी आंसर हो सकते हैं, and of course because we have it in the options, we can say that it is going to be either 1 or 2. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजीली बन जाता, अगर सिर्फ फर्स्ट आवर को भी डिकोड कर लेते ना तो भी इसका आंसर मिल जाता। सो यू नीड नॉट हैव डन द एंटायर टेबल फॉर दिस क्वेश्चन। So what I was mentioning at the start that it's not recommended that you do the entire set during the test, but at least ये पता चल जाए ना कि फर्स्ट आवर की बात चल रही है। इवन इफ यू डू दैट मच, आई थिंक यू शुड बी फाइन। तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे फ्री में। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू? नर्मदा सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क। ठीक है, नर्मदा ने 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क बेचा। अभी नर्मदा ने 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क तो बेचा ही नहीं है, 1 यूनिट ऑफ एप्पल बेचा है और 1 यूनिट ऑफ मैंगो बेचा है। सो नर्मदा हैज डेफिनेटली नॉट सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क। कावेरी सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मैंगोस। कावेरी ने मैंगोस का 1 यूनिट बेचा है क्या? सो कावेरी, इफ यू लुक एट इट, कावेरी हैज सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मैंगोस हियर, बट इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। ऐसा भी हो सकता है कि उसने मिल्क का 1 यूनिट और एप्पल का 1 यूनिट बेच दिया जो लेफ्ट ओवर था। सो ऑप्शन टू ऑल्सो वी कांट से विद सर्टेनिटी। गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर एप्पल्स। सो गंगा ने एप्पल्स बेचे ही नहीं, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, व्हिच इज डेफिनेटली ट्रू। Ganga sold 1 unit of leftover milk and 1 unit of leftover mango. तो गंगा definitely did not sell any leftover apples. Makes sense. And यहाँ पे ये तो definitely false है because गंगा sold 1 unit of mangoes and 1 unit of milk that was leftover. So इसका answer is going to be option C. ठीक है? So that is the answer to the second one. Third question देख लेते हैं. What best can be concluded about the total number of units of milk the three women had in the beginning? तो जितना बेचा उतना milk होना चाहिए था. That's what we are trying to say. So let's try to see how much milk would have been there. अब मिल्क कहाँ कहाँ यूज होता है? फ्रूट सैलड छोड़ के बाकी सब जगह पे मिल्क इज गेटिंग यूज्ड, राइट? सो सारे स्मूदीज में मिल्क यूज होगा एंड सारे स्मूदीज में मिल्क यूज होगा बेसिकली, एंड लेफ्ट ओवर अगर इफ समवन हैज सोल्ड समथिंग, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी यहाँ पे वी हैव बीन टोल्ड दैट एप्पल स्मूदी तो इसका बन ही रहा है। सो आई जस्ट यूज टैली मार्क्स टू डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मिल्क दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे एक डैश डाल दिया बिकॉज एप्पल स्मूदी डेफिनेटली बना हुआ है। अभी ये 12 रुपीज जो है ना, वो या तो मिल्क स्मूदी से बन सकते हैं या तो फ्रूट सैलड से बन सकते हैं। तो यहाँ पे 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो आई जस्ट राइट दिस 1 हियर। आई डोंट नो, दिस इज एन इफी सिचुएशन दैट एग्जिस्ट्स। सेकंड वाले में, सेकंड आवर में बनाना स्मूदी बनाया तो 1 यूनिट मिल्क लगा, एप्पल स्मूदी बनाया तो एक और यूनिट मिल्क लगा। थर्ड आवर में बनाना स्मूदी बनाया तो एक और यूनिट मिल्क लगा। मिक्स्ड फ्री फ्रूट स्मूदी बनाया तो वहां पे भी 1 यूनिट मिल्क लगा। लास्ट आवर के अंदर अगर देखते हैं तो मैंगो स्मूदी डेफिनेटली बनाया है तो 1 यूनिट ऑफ मैंगो स्मूदी, एंड एक फ्रूट सैलड बेचा तो वहां पे डेफिनेटली कुछ भी मिल्क नहीं लगा। एंड हियर इफ यू लुक एट इट, 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क हैज आल्सो बीन सोल्ड बाय गंगा इन द लास्ट आवर, तो वो यहाँ पे आए। तो कितनी यूनिट्स ऑफ मिल्क होने चाहिए थे विद गंगा? 5, 7 एंड 1, 7 प्लस 1 और 0। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ गंगा जस्ट राइट इट हियर, 7 प्लस 0 और 1। ठीक है, तो बेसिकली 7 और 8 यूनिट्स। आई जस्ट राइट 7 और 8 यूनिट्स हियर सो दैट अपना लाइफ बिकम स्लाइटली इजी। ऑलराइट, 7 और 8 यूनिट्स। व्हाट अबाउट कावेरी? अब कावेरी के केस में फिर से वही चीज अगर देखी जाए, वी नो दैट यहाँ पे मिक्स फ्रूट स्मूदी बनाया तो 1 यूनिट तो पक्का यूज किया है। यहाँ पे बनाना स्मूदी बनाया तो 1 यूनिट यूज किया है। फ्रूट सैलड नॉट रिक्वायर्ड। एप्पल स्मूदी 1 यूनिट। मिक्स फ्रूट स्मूदी 1 मोर यूनिट। एंड लास्ट इफ यू लुक एट इट, इट्स ईदर बनाना स्मूदी प्लस फ्रूट सैलड और बनाना स्मूदी प्लस एप्पल स्मूदी। तो या तो 2 यूनिट्स है या तो 1 यूनिट है, बट 1 यूनिट तो पक्का है।
एंड दी सेकेंड वन वी हैव टू फिगर आउट है कि नहीं. यहाँ पे भी if you look at it 5 और 6 में either it is 1 unit of milk plus 1 unit of apple or 1 unit of milk plus 1 unit of mango. तो यहाँ पे 1 unit of milk तो पक्का उसने सेल किया होगा. So here we can see that 6 is for sure and 1 is optional. तो 6 और 7 will be covered. And नर्मदा का केस अगर देखा जाए तो you will have one fruit salad not counting towards anything, one mixed fruit smoothie, so one banana smoothie, one apple smoothie, one apple smoothie again, one fruit salad, so doesn't work, one mixed fruit smoothie, तो यहाँ पे एक और यूनिट, एंड यहाँ पे भी आप एप्पल प्लस मैंगो, तो यहाँ पे कोई भी मिल्क यूज नहीं किया गया है. सो 5 इज बेसिकली व्हाट वी हैव. So what all combinations are possible? We can have 7 plus 6 plus 5. So you will have 18. That is a possibility that exists. You can have 7 plus 7 plus 5, which is 14 plus 5, that is 19. That is a possibility. You can have 8 plus 6 plus 5, which will again be 19. तो उसको वापस नहीं लिखते, 19 लिख देते, चलो, doesn't matter. And last is 8 plus 7 plus 5, which is 20. So the combination that is going to be possible here, or combinations that are going to be possible here, are 18, 19 or 20. तो कितने यूनिट्स ऑफ मिल्क थे? इधर 18 और 19 यूनिट्स और 20 यूनिट्स. सो दीज आर दी थ्री कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल हियर. सो ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अभी, एंड देन वी शुड बी डन विद द फर्स्ट सेट. If it is known that 3 leftover units of mangoes were sold during the last business hour of the day, 3 leftover units of mangoes बेचे थे last hour of the day, how many apple smoothies were sold during the day? तो लास्ट में ना 3 leftover units of mangoes were sold. तो एक बार देखते हैं लास्ट ओवर में चल क्या रहा है. यहाँ पे भी नो दैट 1 leftover unit of mango was sold for sure. यहाँ पे 1 leftover mango was sold. तो यहाँ पे leftover mango सेल होना चाहिए, which means that we are looking at this bottom case. मिल्क प्लस मैंगो सेल किया था, which means we are looking at 6 rupees that would have been gained by selling the leftover items, which means that we are looking at this one. अपने को गिनना है एप्पल स्मूदी कितना बेचा था. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस. अभी यहाँ पे एप्पल स्मूदी तो एक ऑलरेडी है, सो वी नो वन एप्पल स्मूदी वाज डेफिनेटली सोल्ड हियर. यहाँ पे वन एप्पल स्मूदी, आई जस्ट ट्राई ड्रॉ represented in a different color maybe so that it is more visible, and ये भी वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, so we don't need to do anything else. तो ये वन हो गया, ये एक और एप्पल स्मूदी हो गया. यहाँ पे तो कोई एप्पल स्मूदी दिख नहीं रहा. यहाँ पे if you look at it, ये एक एप्पल स्मूदी हो गया. यहाँ पे if you look at it, because this is in a box, ये एप्पल स्मूदी will now become live. यहाँ पे अगर देखेंगे ये एक एप्पल स्मूदी है अपने पास और ये एक एप्पल स्मूदी है, बाकी कहीं पे भी एप्पल स्मूदीज नहीं दिख रहे हैं. So how many red circles do we have on screen? If you look at it, 1, 2, 3, 4, 5, 6 red circles we have, which means that there should have been 6 apple smoothies that should have been sold during the day. So 6 will be the answer to this one. Now it's not a very easy set. It's a complicated set for sure. But once you know what needs to be done, you have to rely on your instincts. ठीक है. अब इसके अंदर I will not expect amazing accuracy because there is so much of stuff to be written. Mixed fruit salad और fruit mixed fruit smoothie and fruit salad के अंदर कभी भी गलती हो सकती है. Sometimes you might not really count milk somewhere, you might not count mango somewhere. तो ये सारी चीजें पॉसिबल है. वो मैंगो और कोई यूज नहीं कर रहा है, ये स्ट्राइक होना चाहिए. So all these things will come together and will deter you from solving this set correctly or easily or fluently. But that is basically the challenge, right? You have to ये वाला set will separate the 99.5 percentiler from the 100 percentiler, right? तो 100 percentiler किसी को चाहिए तो ये set solve करना जरूरी है, of course, but which means that you would have done an amazing job on all the other sets. Then you should ideally get into this set. Otherwise, एक या दो questions you can attempt. Last वाला तुक्का मारना है, मार सकते हो. Once you figure out that 11 is going to be present somewhere, and if you figure out ये split, तो 11s मिलना बहुत easy है. You will know that ये 1, 2, 3, 4, 5 बिना एमबीबीटी के 5 एएस मिल जाते हैं. यहाँ पे if they have given you this thing, then you might be suspicious and say that नहीं दिया है तो फिर I'll say 6 करके. So that's a bet that you can take, right? But यहाँ पे first question definitely should have been done. Second, I don't know how easy or difficult it would have been for you. बहुत अंदर डेप्थ में जाओगे तो ही second question बनेगा. Third question, if you look at it, again it's very complicated. तीन अलग अलग चीजें हैं. I will not go for this. But fourth question, I might want to take a punt on it. So first question, for sure I should get it right. 3 marks वहां पे मिलने ही चाहिए. And last question में एक bet ले सकते हैं. मिला तो ठीक, नहीं मिला तो 0. So 3 marks is what you can expect from this set. तो इसमें टाइम भी उतना ही इन्वेस्ट करना है. You should not invest more than 5, 6, 7 minutes while getting these 3 marks. तो अगर 5 मिनट में 3 मार्क मिल रहे हैं, you should get out of this set instead of staying put and solving it till the end. ठीक है. Unless you are absolutely certain कि ये बन जाएगा. Fine. Abhi, let's look at the next one. I hope everything is clear. If there's something, let me know in the chat. If something is not clear, something you need more
I think you need me to go through it again तो let me know, but I think once you go through the flow पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है. Okay. Second set, a journal plans to publish 18 research papers. तो वो एक जर्नल है, उसमें 18 research papers आएंगे written by 8 authors. So A, B, C, D, E, F, G, H are 8 authors. वो 4 issues में इसको publish करेंगे. And these issues are scheduled in the month of Jan, April, July and October. So 1, 4, 7, 10. Each of these research papers, so I'm talking about the month, right? 1, 4, 7. Doesn't matter. I just said. Right. Each of the research papers was written by exactly one of the 8 authors. तो एक ने किसी ने लिखा होगा 18 पेपर्स है तो एक एक करके लिखे लोगों ने. 5 papers were scheduled in each of the first 2 issues. तो Jan में 5 papers were scheduled, April में 5 were scheduled, while 4 were scheduled in the last 2 issues. तो जुलाई में 4 किए हैं, अक्टूबर में 4 किए. Every author wrote at least one paper and at most 3 papers. So at least one paper तो लिखा हुआ है, at most 3 papers लिखे हुए हैं. We know that the total papers written by A, D, G and H, sorry, A, D, G and H was double the total number of papers written by the other 4 authors. So A, D, G और H ने जो लिखे हैं वो डबल थे बाकी 4 authors के. So let's say these 4 authors would have written X papers, A, D, G, H would have written 2X papers. But we know that total तो 18 papers हैं. So we know that 2X plus X is 18 or 3X equals 18 or X equals 6. सो ए डी जी और एच ने सबने मिला के 12 पेपर्स लिखे हैं कंबाइंड एंड बाकी 4 लोगों ने मिलके 6 पेपर लिखे, सॉरी 6 पेपर्स लिखे. ठीक है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल सी वन स्मॉल थिंग हियर. एवरी ऑथर रोट एट लीस्ट वन पेपर एंड एट मोस्ट 3 पेपर्स. तो अगर मैक्सिमम पेपर रिटन बाय वन पर्सन इज 3, तो 4 लोग मैक्सिमम कितने पेपर्स लिख सकते हैं? 12 भी लिख सकते हैं ना. So A, D, G and H have written 12 papers, means that each one of them would have written 3 papers. So A ने 3 papers लिखे हैं, D ने 3 लिखे हैं, G ने 3 लिखे हैं and H ने 3 लिखे हैं. So that is what we will know. And the remaining 4 authors, B, C, E and F would have written 1 paper each. We will look at it a bit later as well. But अभी के लिए I'm just telling you कि पढ़ते पढ़ते भी you can maybe visualize a few things. 4 of the authors were from India and 2 each were from Japan and China. So 4 authors इंडिया से थे, 2 जापान, 2 चाइना. Each author belonged to exactly one of the 3 areas: manufacturing, automation and logistics. तो 3 areas में भी belong करते थे. 4 of the authors were from logistics area, 2 were from automation and 2 should have been from manufacturing. As per the journal policy, none of the authors could have more than one paper in any issue of the journal. तो एक ऑथर एक ही बार आएगा इन एनी इशू ऑफ द जर्नल. सो जनवरी इशू जो है ना, उसमें एक ऑथर एक ही बार आ सकता है. ए कैन नॉट हैव 2 पेपर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, एक ही पेपर होगा in any issue of the journal. Then we have all these things that has been written here. I'll just try to maybe make it look slightly better. Better नहीं, but I will just try to expand the thing that we have here so that we are able to see everything in one go. ठीक है, so इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं so that our life becomes easier. ठीक है. नाउ ये एक बार कर लेंगे तो वी विल कैन मे बी हैव अ ब्लैंक स्लाइड एंड वी कैन सी व्हाट द रिप्रेजेंटेशन लुक्स लाइक. सो अपने को क्या करना है, अपने को 3 लेवल पे इस चीज को देखना है. वन इज द मंथ दैट वी हैव. सो वी हैव द मंथ्स ऑफ जनवरी, फर्स्ट मंथ, देन द फोर्थ मंथ अप्रैल, द सेवेंथ मंथ जुलाई एंड द 10th मंथ अक्टूबर. तो इसमें कुछ कुछ जर्नल्स बने होंगे, दैट मच वी नो. We need to know that if there are some publications. So I think Jan and April had 5 authors contributing or 5 articles that were there, and July and October में there were 4 articles, research papers that were published. ठीक है, so Jan 5, April 5, July 4 and October 4 ये अपने को पता है. We need to figure out who was where. That much we need to figure out. We also know A, B, C, D, E, F, G, H 8 लोग हैं. So we need to understand which country they are from and which specialization they are from. So we will just write A, B, C, D, E, F, G and H. ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे लिखेंगे. We'll just try to put dashes and see if we are able to get everything correct. We know that A, D, G and H had all published 3 papers. तो ये अपने को पता है. So A published 3 papers, D published 3 papers, G published 3 papers, H published 3 papers. तो ये हो गए. And बाकी B, C, E and F cumulatively would have published 6 papers. That is what we know. But इसका भी पता नहीं था अपने को. अपने को ये भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक्स के एरियाज हैं एंड कंट्रीज, राइट. सो वी ऑल्सो हैव कंट्री हियर. सो आई जस्ट राइट कंट्री हियर.
and I will write area here. ठीक है. So country and area. Better to have lines here. Otherwise, we might end up making some mistake because of some parallax error. Right. So it's always recommended, especially when I'm doing it online in front of all of you, that I put all these lines in place so that वी आर डन विद दिस इन वन गो राइट. नहीं तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाता है, कहीं पे समथिंग गोस अमिस, देन इट्स अ प्रॉब्लम राइट. सो ये बन गया है. इतना टेबल शुड बी गुड ना. आई डिड नॉट गो फॉर नॉर्मल टेबल्स बिकॉज प्री फिल्ड टेबल्स बिकॉज देन इट डज नॉट सिमुलेट ना हाउ यू आर गोइंग टू डू इट ड्यूरिंग द टेस्ट. सो टेस्ट में इतना बनाएंगे तो अपना काम बन जाना चाहिए आइडियली. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एफ इज एन इंडियन ऑथर फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स एरिया. तो एफ इंडियन लॉजिस्टिक्स ये अपना हो गया. एफ इज एन इंडियन ऑथर, सो कंट्री इज इंडिया and area is logistics. ठीक है. F is an Indian author from the logistics area, wrote only one paper. ये भी अपने को दिया हुआ है, एक ही पेपर लिखा F ने. अब बाकी तीनों ने मिला के 5 पेपर लिखे होंगे राइट, बिकॉज वी हैड 6 टू फिल इन दीज 4 कैटेगरीज. ठीक है. कृष्णा आई विल रिप्लाई टू दिस वंस वी आर डन विद दिस. ठीक है, जस्ट टिप. सो या इंडिया लॉजिस्टिक्स 1 ये हो गया. स्केड्यूल इन द अक्टूबर इशू, तो अक्टूबर में जो 4 लोगों ने लिखा था उसमें से 1 वाज F. दैट मच वी नो. And F did not feature anywhere else. तो ये part we have taken care. A was from the automation area. A was from the automation area. तो A के area के सामने automation लिख देते हैं. We can write A, M and L by the way. I'm just writing automation. And did not have a paper scheduled in the October issue. तो अक्टूबर में A ने पेपर नहीं लिखा, but A has written 3 papers. So अगर A ने अक्टूबर में पेपर नहीं लिखा, A would have written a paper in each of the 3 issues except October. तो जैन, अप्रैल, जुलाई तीनों जगह पे एक एक पेपर लिखा हो A ने. ठीक है. सो A इज ऑटोमेशन. A के कंट्री के बारे में कुछ बताया नहीं. सो अगेन वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग दैट वाज देयर इन दिस पॉइंट. None of the Indian authors were from the manufacturing area and none of the Japanese or Chinese authors were from the automation area. None of the Indian authors were from the manufacturing area, okay, and none of the Japanese or Chinese authors were from the automation area. अभी जापानीज और चाइनीज ऑटोमेशन एरिया में से नहीं है, तो इंडियंस हैव टू बी फ्रॉम द ऑटोमेशन एरिया. तो ए विल हैव टू बी इंडियन और ए विल हैव टू बी फ्रॉम इंडिया. ये समझ में आ गया अपने को राइट. सो इंडिया के 2 लोग मिल गए हैं अपने को. 2 पीपल वी नीड फ्रॉम इंडिया, 2 फ्रॉम चाइना, 2 फ्रॉम जापान. तो ये वाला पार्ट वी आर टेकन. ये वाला पार्ट हो गया. None of the Indian authors were from manufacturing. Maybe we will be able to use this point a bit later. So let's see. A and H were from different countries but had their papers scheduled in exactly the same issues. तो A और H के same issues में आए थे. A का A was published in Jan, April, July. So H should have also been published in Jan, April and July. And we know that A and H belong to different countries. So different countries मतलब H के केस में H is either from China or Japan. So I'll just write C or J here just to make our life slightly easier. Does not require, but we can just keep it written here. Okay. So this we have taken care of entirely. A and H were from different countries. C and E were both Chinese authors. So C and E अगर दोनों Chinese हैं तो C के सामने I'll write China here and E के सामने I'll write China here. We know that there are exactly 2 people from China. तो फिर ये तो चाइना से हो नहीं सकते. नहीं तो फिर if H is from China then it's a problem. So H is from Japan. That much we can say. And बाकी सारे जो होंगे ना, all those people will be from either India or Japan. Why? Because there are 2 authors from China and both of them have been identified. C और E दोनों चाइना के authors हैं. So that much we have identified. Fine. So ये समझ में आ गया. They were from different areas. We know that Chinese authors were not from automation area. तो वो या तो मैन्युफैक्चरिंग से होंगे या तो वो लॉजिस्टिक्स से होंगे. So I'll just write manufacturing slash logistics here. I'll write manufacturing slash logistics here. Similarly, we know that none of the Indian authors were from manufacturing and none of the Japanese or Chinese were from automation. तो अब ये भी जापान से है तो ये भी ऑटोमेशन से नहीं हो सकते. So this person will have to be from either manufacturing or logistics. That much we'll be able to understand. ठीक है. तो यहाँ पे मोस्टली वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर्स शेड्यूल. तो सी और ई के पेपर सेम थे. नाउ बी, सी एंड ई टुगेदर वी आर लेफ्ट विद 5 पेपर्स. बिकॉज हमने बोला था कि पूरे मिला के 18 है, उसमें से 12 आर डन बाय ए, डी, जी एंड एच. सो बी, सी, ई, एफ मिलके 6 पेपर्स होने चाहिए थे. अब 1 इज हियर. तो यहाँ पे वी आर सेइंग दैट सी एंड ई, राइट, सी एंड ई हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल. तो सी एंड ई के पास या तो 1 1 होगा या तो 2 2 होगा. 3 3 तो हो नहीं सकता बिकॉज टुगेदर दीज 3 people have to contribute 5 articles, right? So 5 करने के लिए यहाँ पे 3 3 तो नहीं कर सकते. तो या तो 1 1 है या तो 2 2 है.
लेट्स सी। फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव इश्यूज। कंसेक्यूटिव इश्यूज मतलब ई के पास दो पेपर तो होने ही चाहिए फॉर श्योर, राइट। तो ई के पास अगर दो पेपर होने चाहिए एटलीस्ट, तो सी के पास भी दो पेपर होने चाहिए एटलीस्ट। तीन तीन तो कर नहीं सकते, तो सी विल बिकम टू, ई विल बिकम टू एंड बी विल बी वन। तो अपने को सबके पेपर्स मिल गए कि हाउ मेनी पेपर्स आर दे गोइंग टू स्केड्यूल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मिल गया है। नाउ माइट बी अ गुड टाइम फॉर टू लुक एट द क्वेश्चंस एंड सी हाउ मेनी पेपर्स हैव बीन रिटन बाय बी सी ई जी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अपने को बहुत इजीली मिल जाएगा 1 2 2 1। तो इवन विदाउट सॉल्विंग द एंटायर सेट यू विल बी एबल टू गेट दिस क्वेश्चन फॉर श्योर। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी सी सी, sorry, our answer will basically be 1 2 2 1 B C E G na, B C E G. So B is 1, C is 2, E is 2 and G is 3. So G पूछा है, not F, right? So the answer here will be option C, right? 1 2 2 3 होगा आंसर यहाँ पे, because G पूछा हुआ है लास्ट का, F नहीं है। अगर F होता तो 1 2 2 1 होता, B C E G है, that's why it will be 1 2 2 3। और देख लेते हैं हाउ मेनी पेपर्स वर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। इज देयर अ वे टू फिगर आउट हाउ मेनी पेपर्स वर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। चाइना के तो दो मिल गए हैं, जापान का 1% वी हैव फाउंड आउट, इंडिया का वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस, सो एट दिस पॉइंट इन टाइम वी विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। एवरी इशू had at least one paper by author from each country, every issue had at most two papers by author from each area। we don't know पूरा का पूरा construct, तो कुछ कर नहीं सकते। which of the following statements is false, again ये question है। every issue had exactly one paper by Chinese author, automation area logistics, ये भी अपने को पता नहीं है अभी तक, तो we can't do anything about it। which of the following is false, again we don't know anything about who did what in which issue, तो अभी तक नहीं कर सकते। and papers by authors from automation, manufacturing and logistics, ये भी अपने को नहीं पता। ठीक है, so we don't know all these things, but at least यहाँ तक हम लोगों ने किया है, and I think we took some, maybe if you would have done it as a serious test taker, you might have taken maybe 5 minutes to arrive at this and you could have easily answered one question। ठीक है, अभी यहाँ पे E had papers scheduled in consecutive issues of the journal but C did not। अब consecutive issues मतलब क्या हो गया, E या तो जनवरी और अप्रैल में किया है, या तो अप्रैल और जुलाई में पब्लिश हुआ है, या तो जुलाई एंड अक्टूबर में पब्लिश हुआ है। सो consecutive जगह पे E has been published and C definitely did not get published in consecutive issues, so which is fine। we know that B was from logistics area, so B को B के सामने logistics लिख देते हैं, so B के सामने logistics लिख देंगे। ठीक है, B was from logistics area and had a paper scheduled in the April issue of the journal। तो B ने एक ही पेपर लिखा है और वो अप्रैल इशू में लिखा था, तो B will be here and B का बेसिकली काम हो गया। B को और कहीं पे हम लोग लिख नहीं सकते, राइट। दैट इज व्हाट वी नो। And let's see how many people are from where। Four are from logistics to automation, right? Four logistics to automation and to manufacturing, just write it here for our reference। Four logistics to manufacturing and to automation। ठीक है, तो ये अपने पास है, तो let's see what happens। We already looked at two logistics and ये तीन में से दो, या जो भी दो मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं, दो लॉजिस्टिक्स हो सकते हैं। सो लेट्स अगेन वी डोंट हैव एनीथिंग सिग्निफिकेंट एज ऑफ नाउ, बट वी जस्ट नो दैट ये लॉजिस्टिक्स है, ये M/L है, ये M/L है, ये लॉजिस्टिक्स है, ये M/L है। सो 1 2 3 4 5 वी हैव अकाउंटेड फॉर आउट ऑफ 6। तो ये जो बचे हुए लोग हैं ना यहाँ पे, सो दिस वन एंड दिस वन, राइट। Yeah, out of these two, one will be automation and one will be logistics or manufacturing, we don't know, right? ठीक है, at this point in it not it। And April issue, ये वाला पार्ट हो गया। B and G belong to the same country। अब B and G belong to the same country। अभी यहाँ पे जापान चाइना के दो हो गए हैं, जापान का we know that H is there। if B and G has to be from the same country, दोनों चाइना के तो नहीं हो सकते, because China is only two people who are representing them and Japan also has two people who are representing it। तो यहाँ पे B और G दोनों इंडिया से, so B will be from India and G will also be from India, that much we will। we also know that इंडिया के अंदर जो भी थे ना, वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया के थे ही नहीं, सो मैन्युफैक्चरिंग एरिया के नहीं थे, सो लॉजिस्टिक्स या ऑटोमेशन में से कुछ होगा। वी डोंट रियली नो, वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। वी कैन राइट L/A बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेट इट। ठीक है, तो बिलोंग टू द सेम कंट्री हो गया। नन ऑफ द पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन द सेम इशू ऑफ द जर्नल। सो बी और जी एक ही इशू में नहीं लिखे थे इन्होंने, राइट। अभी यहाँ पे वी नो दैट बी हैज बीन पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जी हैज बीन पब्लिश्ड इन 3 months। अब बी और जी अगर साथ में पब्लिश नहीं हुए थे, वी नो फॉर श्योर दैट जी शुड हैव बीन पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जुलाई एंड अक्टूबर। तो अपने को जी के तीनों पब्लिकेशन मिल गए हैं, अपने को ए के तीनों पब्लिकेशन समझ में आ गए कहां पे है, अपने को एच के तीनों पब्लिकेशन समझ में आ गए हैं, अपने को बी का वन पब्लिकेशन समझ में आ गया है कहां पे है,
And what else do we know? D we haven't figured out yet, C we haven't figured out yet, E we haven't figured out yet, and F we have figured out. तो C D E के अभी अपने को मंथ्स पता चलेंगे, तो we will see what happens. Let's see. Fine. So this is again taken care. D, who is a Japanese author from the manufacturing area. तो काफी लेट आ गया यहाँ पे, but we know that G is a Japanese author, which was obvious because there was only one person left. And D is a Japanese author from the manufacturing area. तो यहाँ पे manufacturing भी आ गया. Now we can make use of this fact that 4 logistics and 2 manufacturing होने चाहिए थे, right? So अब यहाँ पे we know that this person is logistics for sure. ये मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक्स है, ये लॉजिस्टिक्स है, और ये मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक्स है. So we have accounted for 6 people, which means that G should be the one who is from automation. ठीक है, तो अभी अपने पास कंट्रीज सबके सब आ गए हैं, वहां पे अपने को इश्यू नहीं है. एरिया के अंदर मोस्टली वी आर डन. We just need to figure out where will the remaining 2 logistics be and where will the remaining 1 manufacturing will be. तो एक बार देख लेते हैं. We should be fine. We should be able to get it. ठीक है, let's see what we are able to understand from this, and we should be fine. Fine. We know that ये वाला तो पार्ट हो गया अपना. And D did not have paper scheduled in the July issue. So D का जुलाई इशू में नहीं था, but D has published 3 papers. So D should not be in July. D has to be in October, April and January. ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपने को बन जाएगा. अब ये वाला मिल जाएगा. Very easy. Now let me C and E. We need to figure out what needs to be done here. So let's see what can be done. अभी यहाँ पे we had used one entirely. C and H belong to different areas. Sorry, C and H belong to different areas. So C M/L है और ये M/L है. So one of them has to be manufacturing, one of them has to be logistics. ठीक है, अभी अपने पास मैन्युफैक्चरिंग एक ऑलरेडी हो गया है. One of these 2 people has to be manufacturing, right? One of them has to be logistics. तो उससे अपने को क्या पता चलेगा? अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कवर हो जाएंगे. सो ई मैन्युफैक्चरिंग में से हो ही नहीं सकता. ई हैज टू बी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन बिट ऑफ एम्बिग्विटी. इसमें से मैन्युफैक्चरिंग कौन है, इसमें से लॉजिस्टिक्स कौन है, एंड वी आर गोल्डन. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर. F, who is an Indian author from logistics area, wrote only one paper and scheduled in October. ये पूरा का पूरा हमने यूज कर लिया है. F लॉजिस्टिक्स से था, ये समझ में आ गया. A was from automation area, और A के अपने को बाकी तीनों पेपर समझ में आ गए. दैट अक्टूबर में नहीं है तो जैन अप्रैल जुलाई में करना चाहिए था. None of the Indian authors were from the manufacturing area, which is fine. अभी यहाँ पे इंडियन ऑथर्स है ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग सीधा डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, राइट? सो दैट वी हैव टेकन केयर ऑफ. एंड नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज वर फ्रॉम ऑटोमेशन, व्हिच इज अगेन फाइन. ऑटोमेशन के 2 लोग थे, एक ए था और एक जी था. सो ए एंड जी, बोथ ऑफ देम वेर फ्रॉम इंडिया एंड वेर पब्लिशिंग पेपर्स ऑन ऑटोमेशन. सो दैट इज अगेन टेकन केयर ऑफ. सी एंड sorry, this is taken care of. A and H were from different countries. So countries तो अपने सारे हो गए हैं. A and H were from different countries, agree. But their papers had their papers scheduled in exactly the same issues. ये भी हम देख चुके हैं. A और H साथ में पब्लिश होंगे. Then what do we have? C and E are both Chinese authors from different areas. अब C and E अलग अलग areas से हैं. अगर E लॉजिस्टिक्स से है, that we have found out, then C has to be from manufacturing. So यहाँ पे C जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग से होगा, which will mean that H will be from logistics. So अभी now we have got everything that is there except कि पेपर्स कब पब्लिश हुए थे. वो अगर फिगर आउट कर लेंगे then we would have got everything. ठीक है, तो अब ये हो गया. We also know that E had paper published in consecutive issues of the journal, but C did not. अब E के consecutive issues में पब्लिश हुए हैं 2 जो पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, राइट? सो नाउ E could have been published in January and April. जनवरी में एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है. ठीक है, and we are only left with, who all are we left with now? We have accounted for all A's, B's, D's, F, G and H. ठीक है, तो C और E बचे. तो अब ये ब्लैंक्स में से ना मेरे पास 2 C होंगे और 2 E होंगे. We have been told one very simple thing that E had paper in consecutive issues. तो E के अगर consecutive issues में थे, तो अगर E जनवरी और अप्रैल में पब्लिश होता है, let's say, then E will have to be published in July and October. वो तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अगर यहाँ पे we are saying that E is published in April and July, then C can be published here, तो प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर C यहाँ पे और यहाँ पे, सॉरी E जो है ना, E है कंसेक्यूटिव में. ठीक है, तो 3 केसेस हैं. जस्ट राइट इट डाउन अगेन बिकॉज वी लॉस्ट द ट्रेन ऑफ थॉट. E यहाँ पे पब्लिश हो सकता है, या E यहाँ पे और यहाँ पे पब्लिश हो सकता है, या तो E यहाँ पे और यहाँ पे पब्लिश हो सकता है. 3 केसेस ही हैं अपने पास. बट अगर E यहाँ पे पब्लिश हो रहा है ना, C will have to be published here and here. अगर E यहाँ पे पब्लिश हो रहा है तो C will have to be published here and here. अगर E यहाँ पे हो रहा है तो C will have to be published here and here. This is not possible. This is not possible because C did not feature in 2 consecutive issues. So we will know that the only combination possible is
C should be here, E should be here, E should be here, and C should be here. नाउ वी हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग. कौन कहां से है, कितने पेपर पब्लिश किए हैं, कौन से एरिया से है, कौन से मंथ में पब्लिश हुए थे, एवरीथिंग वी हैव फिगर्ड आउट इन दिस पर्टिकुलर सेट. सो दिस वन टेबल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वी नीड नॉट गेट इनटू मल्टीपल थिंग्स और रिमेंबर मल्टीपल थिंग्स. एक ही इसमें पूरा का पूरा हो जाएगा. वी कुड हैव आल्सो पुट द मंथ्स हियर, दैट कुड हैव आल्सो बीन फाइन, बट वो क्रोनोलॉजी में देखना इजी पड़ता है बिकॉज वी हैव कंसेक्यूटिव पेपर्स एंड ऑल. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू पुट द मंथ्स एज अ सेपरेट टेबल. Otherwise, one table could have also been in. First question, so we already answered. How many papers were written by Indian authors? So Indian authors कौन कौन थे? A was an Indian author, so 3 papers. So I just write 3. Plus B was an Indian author, so +1. Then we have F and G who were Indian authors, so +1 +3. So 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 3 8 हो जाएगा यहाँ पे. So there were 8 papers that were written by Indian authors. That should be the answer to the second question. ठीक है? So in this context, 8 should be the number of people that were written by Indian authors. Fine. Third question अगर देखते हैं, let's look at the third question now. Which of the following statements must be true? Every issue had at least one paper by authors from each country. तो हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेशन था कि नहीं देखना है अपने को, राइट. वी नो दैट ए बी एफ एंड जी आर फ्रॉम इंडिया. तो अब यहाँ पे तो ए है, एफ बी है, तो फिर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली है. व्हाट अबाउट चाइना का रिप्रेजेंटेशन? सी एंड ई आर फ्रॉम चाइना. यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है. परफेक्ट. चाइना का भी रिप्रेजेंटेशन है. जापान के कौन कौन थे? डी एंड एच वेर फ्रॉम जापान. सो डी इज हियर, डी इज हियर, डी इज हियर एंड एच इज हियर. तो जापान का भी रिप्रेजेंटेशन पूरा का पूरा है. सो ईच इशू हैड an article, at least one paper by an author from each country. So statement A is definitely true. It must be true. Statement B, every issue had at most 2 papers by author from each area. At most 2 papers. मतलब 0, 1 या 2 from each area. Sorry. ठीक है. So area की बात करते हैं यहाँ पे. So now if you look at what has happened here is, if you look at the first month, January. So A is from automation. H is from logistics. So I just try to write here automation, logistics. G is from automation again. D is from manufacturing. तो अभी तक तो ठीक चल रहा है. And the C is from manufacturing. तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे it's not a problem, right? First month में we have had 5 people who are from 5 different areas. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे again you have A from automation, H from logistics, B is from logistics again, D is from manufacturing, फिर भी ठीक है. E is from logistics. Now there is a problem. At most 2 बोला है, but अप्रैल का तो 3 लोग logistics का पेपर लिख रहे हैं, right? So B, E, एफ एंड एच, बी ई एफ एच के अंदर बी ई और एच तो यहाँ पे लिख रहे हैं. सो इट्स अ प्रॉब्लम. सो 3 पीपल आर राइटिंग लॉजिस्टिक्स पेपर. सो एट मोस्ट 2 नहीं हो सकता. स्टेटमेंट बी इज फॉल्स. सो विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? ओनली स्टेटमेंट ए मस्ट बी ट्रू, राइट. सो दैट इज द आंसर हियर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? एवरी इशू हैड एग्जैक्टली 1 पेपर बाय अ चाइनीज ऑथर. सो चाइनीज ऑथर का एग्जैक्टली 1 पेपर था क्या? देखते हैं. चाइनीज ऑथर्स कौन कौन थे? सी और ई थे. यहाँ पे ओनली सी, ओनली ई, ओनली ई, ओनली सी. स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली ट्रू. ऑप्शन 1 ये तो पक्का ट्रू है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है. एवरी इशू एट लीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया. एट लीस्ट 1 पेपर था क्या ऑटोमेशन एरिया का? देखते हैं एक बार. ऑटोमेशन एरिया वाज डन बाय ए एंड जी, राइट. सो ऑटोमेशन वाज ए एंड जी. तो ए और जी में से एटलीस्ट 1 पेपर है क्या? हाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. स्टेटमेंट 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू. स्टेटमेंट 3, एग्जैक्टली 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरियाज. ये हम पहले वाले में ही कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस टू बी फॉल्स बिकॉज 3 पेपर तो अपने को लॉजिस्टिक्स के मिल गए थे, राइट. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी. ये फॉल्स है फॉर श्योर बिकॉज इफ यू लुक एट द अप्रैल का इशू, वहां पे तो 3 है फॉर श्योर इन द अप्रैल का इशू. सो इट विल नॉट वर्क. फोर्थ, एवरी इशू हैड एग्जैक्टली 2 पेपर्स बाय इंडियन ऑथर्स. अब ये ट्रू होना चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो इंडियन ऑथर्स अगर देखेंगे तो वी हैव ए बी एफ एंड जी. सो ए बी एफ जी में से ना एग्जैक्टली 2 ऑथर होने चाहिए इन ईच इशू. सो लेट्स सी ए बी एफ जी. अब यहाँ पे ए जी है बट बी एफ नहीं है. यहाँ पे ए बी है बट एफ जी नहीं है. यहाँ पे ए जी है बट बी एफ नहीं है. यहाँ पे एफ जी है बट ए बी. So each issue had exactly 2 papers by Indian authors. So this is also going to be true. Fine. So the correct answer, of course, is option C here. I think this one more question after this.
देयर वाज एग्जैक्टली वन पेपर बाय एन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया इन द अक्टूबर इशू। तो अक्टूबर इशू के अंदर कितने पेपर्स थे लॉजिस्टिक्स एरिया के? लेट्स सी, लॉजिस्टिक्स किस किसने किया था? वी नो दैट बी, ई, एफ एंड एच। बी, ई, एफ, एच were logistics. So B, E, F and H. So only F was from logistics. B, E, H तो थे नहीं अक्टूबर इशू के अंदर। तो अक्टूबर इशू में एग्जैक्टली वन पेपर था फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया। सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। वन पेपर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन द अप्रैल इशू। अप्रैल इशू तो हमने लिखा हुआ था आई थिंक। वन पेपर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, यस दिस वाज ट्रू। सो ऑप्शन टू इज आल्सो डेफिनेटली ट्रू। ऑप्शन थ्री, देयर आर एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन द जुलाई इशू। तो जुलाई इशू में मैन्युफैक्चरिंग के कितने थे देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाज डन बाय सी एंड डी, दो ही लोग थे, सी एंड डी ही थे, राइट। जुलाई इशू के अंदर सी एंड डी तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है जुलाई के अंदर। सो डेफिनेटली देयर वाज नो पेपर ऑन मैन्युफैक्चरिंग दैट वाज रिटन इन जुलाई। सो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। लास्ट देख लेते हैं, देयर आर एग्जैक्टली टू पेपर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन द जनवरी इशू। जनवरी मैन्युफैक्चरिंग के दो थे कि नहीं? Yes, they we had, right? D manufacturing था और C भी manufacturing था. So two papers were from manufacturing in the Jan issue. So the last statement is also true. So the correct answer here is option C, which will be false in this particular context. लास्ट देखते हैं, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के कितने पेपर्स थे? सो वी कैन इजीली फिगर इट आउट। ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स। सो ऑटोमेशन वाज डन बाय टू पीपल, थ्री एंड थ्री इन इंडिया, ठीक है। सो ऑटोमेशन वाज डन बाय थ्री पीपल, आई जस्ट राइट इट हियर, सिक्स बेसिकली, थ्री प्लस थ्री, टू पीपल। देन मैन्युफैक्चरिंग वाज रिटन बाय जापान, सो थ्री, एंड चाइना टू, सो फाइव हो गया मैन्युफैक्चरिंग। एंड द रिमेनिंग सेवन पेपर्स शुड हैव बीन फ्रॉम लॉजिस्टिक्स बिकॉज 18 पेपर्स तो लिखे थे, तो वी नीड नॉट सिट एंड काउंट लॉजिस्टिक्स। करना है तो कर भी सकते हैं। वन हियर, प्लस टू, थ्री, प्लस वन, फोर, प्लस थ्री, सेवन, तो यही आएगा। सिक्स, फाइव एंड सेवन इज ए एम एल। सो सिक्स, फाइव, सेवन, ऑप्शन ए शुड बी द आंसर टू दिस, ठीक है। सो दैट वाज बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड सेट। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग set, mostly Sudoku logic, you can say. You're just plugging in things and trying to figure out what works, what doesn't. Basic set. It was not very difficult or something. Manageable set था. But हाँ, given a choice, I would have preferred the second set over the first one. First set में 40 questions थे, second में ज़्यादा questions हैं. So it tilts my entire favoritism towards the second set. ठीक है? तो वो था. I'll take a couple of questions, then we'll close it for the day. Harsh, we are not doing any dedicated one-on-one mentorship sessions, but the batches that we have for the mastery workshops, they are like fairly intimate batches. So we generally have one-on-one interactions with people who are present there. So वहाँ पे तो definitely there is scope to do that. But हाँ, formally, officially, I'm not doing one-on-one mentorships as a part of the courses at this point in time at least. ठीक है? वसीम, कैट मॉक अटेम्प्ट पर एक और लाइव कीजिए। अगर देखा होगा चैनल तो आज ही हमने एक डाला हुआ है अपडेट वहां पे। तो वी विल बी डूइंग अ लाइव मॉक सॉल्विंग दिस वीक एंड वी विल बी डूइंग क्रैक यू, मोस्टली डैश कैट 10। एक बार आई जस्ट चेक वंस इफ आई एम गेटिंग एक्सेस टू दैट मॉक। आई हैव गॉट अ वॉलंटियर, यस, बट मैं एक बार देखता हूँ कि डैश कैट 10 अवेलेबल है नहीं, एंड इफ आई कैन टेक इट एंड इफ दैट इज द केस देन डेफिनेटली विल बी डूइंग डैश कैट 10 दिस वीक, ठीक है। कृष्णा, VRC is killing my oral. I'm not that good with VRC. Difficult to comprehend passages, which makes it difficult to eliminate options in RCs. DILR 20 के ऊपर, QA is 27 to 30, 3 to 4 passages every day, but accuracy is still low. Yeah. So Krishna, see, one thing is ना, करना क्या है ना यहाँ पे, if you look at VARC, if you are not very good at VRC, अगर let's say vocabulary में बहुत gap है, बहुत सारे genres नहीं पढ़े हुए हैं, out of 4 passages you are not able to make sense of maybe 1 or 2 passages, पूरा कुछ भी sense नहीं बन रहा है, it's always better for you to one focus on 2 passages. जो passages समझ में आ रहे हैं that you can manage, just focus on those 2 passages, or 1 या 2 passages is what I would suggest, and pay attention to your VA part, क्योंकि VA part के अंदर generally out of 8 questions 4-5 questions in some years might be straightforward. तो वहां पे invest your effort. 8 questions from here, maybe 5-6 questions from there, 13-14 questions are good enough. जस्ट मेक श्योर कि इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। यू कांट गेट इनटू 13-14 क्वेश्चन विद एन एक्यूरेसी ऑफ 50%, राइट। अभी इतना टाइम देके अपने पसंदीदा टॉपिक से इफ यू आर रीडिंग एन आरसी, देन इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू टू sort of how do I put it, get a lot of answers wrong there, right? So 14 में से अगर 10 11 भी अगर राइट हो जाते हैं, मैथमेटिकली यू आर लुकिंग एट अ स्कोर ऑफ 30 which is better than what you are scoring at QA and DLR, right? तो वो पॉसिबल है,
जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन मे बी वन और टू आरसीज, दैट्स इट, वो करके चल लेना। एक सेकंड थिंग, डिस्कस योर आरसीज, मतलब जस्ट बिकॉज यू सॉल्व 3-4 आरसीज डेली डजंट मीन दैट यू विल आल्सो बी लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस। अभी मैथ्स में लेट्स से मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया, नाउ आई नो दैट दैट फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड समवेयर, अगर तीन में से दो चीजें दी हुई हैं, आई कैन इजीली अप्लाई दैट फॉर्मूला समवेयर एंड कैन जस्ट प्लग इन दी वैल्यूज एंड डू इट। आरसीज में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इनसाइट क्या मिला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Even if I solve 4 RCs, I might still be at the same level after 2 months, right? So that is generally going to be an issue unless you discuss, unless कुछ एक brain में आता है, unless you make it a point to read the genre that is present in a particular passage, वो सारी चीजें करोगे ना, तो ही मतलब you will be able to handle RCs in a much more, how would I put it, professional manner, right? नहीं तो हमेशा हम वैसे ही करते रहेंगे, वही गलतियां होती रहेंगी, वही चीजें होती रहेंगी। That is one thing. And the last bit, I generally recommend people that record yourself when you are solving, record your thoughts कि क्या सोचा मैंने इसके बारे में, ठीक है? कभी भी अगर एक आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, आरसीबी पढ़ते हो ना, ट्राई टू समराइज इट इन योर माइंड, मे बी राइट डाउन अ समरी चाहिए तो, अगर बहुत कॉम्प्लिकेट हुआ है तो रिकॉर्ड योर समरी, देन मे बी पुट द एंटायर आरसी ऑन चैट जीपीटी एंड उनको बोलो कि भाई मुझे इस आरसी का समरी बताओ एज अ 10 year old, ठीक है? दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट एग्जैक्टली सपोज टू बी कॉम्प्रिहेंडेड और अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आरसी एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग, तो दोनों के बीच में गैप कितना है। So once that gap is visible, ना, you are complicating things, or you are not looking at things at a deeper level, ऊपर ऊपर से डेटा पढ़ लिया, right? So majorly वही दो issues होता है, और तो कोई issues होंगे नहीं। So make sure that वो एक बार समझ में आता है issue क्या है करके, then you can practice accordingly। But ये दो तीन hacks जो है वो काम कर सकते हैं। Read longer articles that you have from Aeon, Economic Times, हिंदू, कहीं से भी, मतलब editorials, start with छोटे editorials, चलो 500,000 वर्ड्स आर्टिकल से स्टार्ट करो, समराइज देम इन योर हेड कि अच्छा मेरे हिसाब से ना ये तीन चीजें कवर की हैं ऑथर ने, ऑथर को ये लगा इसलिए ऑथर ने ये पैसेज लिखा, थिंक अबाउट दोस थिंग्स एंड देन पुट इट ऑन चैट जीपीटी, एआई को काम करने दो, व्हाई आर यू पुटिंग इन रैंडम एफर्ट, ठीक है? तो एआई को काम करने दो, आस्क द एआई व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज द समरी एज यू वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू अ 10 year old, एंड देन कंपेयर नोट्स। इफ यू आर थिंकिंग अलोंग द सेम लाइंस, ग्रेट, नहीं तो धीरे 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 यू विल रीच दैट पॉइंट, ठीक है? सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट इन केस ऑफ एक्यूरेसी नीचे है। एक तो अटेम्प्ट नीचे लेके आ जाओ, अटेम्प्ट ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं तो अटेम्प्ट मत करना, एंड देन ट्राई टू डेवलप योर रीडिंग धीरे धीरे धीरे, एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन, ठीक है? सो आई थिंक ऑन दैट नोट वी शुड बी फाइन। समथिंग हैपेंड टू माय वीडियो, but yeah, so on that note I think we can end the session. Thank you Aditya for the kind words, and Krishna, I hope it covered your query, and if it does not, then just put a comment and I'll try to reply to that, ठीक है? चलो, so on that note I'll close the session. Thank you everyone for turning up. We will have another session tomorrow. Tomorrow we will be having a session at 8 p.m. hopefully, so make sure that you are there on time, and I will also make sure that I'm there on time, ठीक है? चलो, so on that note we'll close the session.